in India, आज आम देखा 1857 रिवॉल्ट 1857 रिवॉल्ट ठू बेसी इंपोर्टेंट है कि हम बैकग्राउंड जानिबा जोटा कि हम काली भी देखिथिले कि सब्सिडियरी अलायंस जो लेट इट बी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किंबा आमी जो रेवेन्यू पॉलिसी गुडा थिला तांकर जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लाइक परमानेंट सेटलमेंट बा जमींदार सिस्टम महलवारी सिस्टम रतवारी सिस्टम तालुकदारी सिस्टम ये जो हम सिस्टम सब देखुले कि these were the land revenue system which was prevailed or they experimented in India in the purpose of exploiting or collecting more revenue for the company. तो कोटी ना कोटी से बैकग्राउंड कजेस सबू जब बैकग्राउंड इफेक्ट सबू ऑल टुगेदर दैट विल लीड टू द 1857 रिवॉल्ट. तो रिवॉल्ट जिते बले हम कहूँ रिवॉल्ट ना एटा गोटे कोनोसी गोटे इंसिडेंट बा एक्सीडेंट नथिला. एक्सीडेंट अर्थ गोटे कई लोक इनवॉल्व थे जड़े दी जन लोक इनवॉल्व रही इंसिडेंट कौच सडनली बट व्हेन वी से रिवॉल्ट मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल अ नंबर ऑफ पीपल दे विल कम टुगेदर एंड दे विल रिवॉल्ट अगेंस्ट ए सिस्टम. दैट मीन्स जो ग्रुप ऑफ लोक आसुचंती गोटे हम कह सब्सटेंशियल ग्रुप आसुची तो ये ग्रुप मीन्स बहुत जनकर प्रॉब्लम हम दैट मीन्स जानि परिबा. तो बहुत जन को प्रॉब्लम गोटे दिन रे हबो नहीं ये तो बहुत दिन रो प्रॉब्लम. दैट मीन्स 1857 रो गोटे होची हमर बैकग्राउंड कॉजेस आ गोटे होची इमीडिएट कॉजेस. तो कॉजेस को जति हम डिवाइड करिबा वन वुड बी बैकग्राउंड आ गोटे रहबा इमीडिएट कॉज रहबो. तो ऑब्वियसली को आर भी सेमति दीटा कॉजेस रहबो गोटे बैकग्राउंड गोटे इमीडिएट कॉज रहबो. The background cause कौन रहिबो मु आगे टिके खाली समर कर दे then I will go through the slide. In background it would be like let's say political causes. I will say in political causes, I will say social causes, I will say economical causes or what was the economical causes like this. Political causes रे कौन हबो जेमति कि हम देखले डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स सब्सिडियरी अलायंस रे कौन हैला बहुत सारा जो लोकल रूलर दे लॉस्ट देयर किंगडम दे लॉस्ट देयर पावर लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स. तो पॉलिटिकल कॉजेस रे हम देखिबा कि लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो कि सब्सिडियरी अलायंस द्वारा बहुत सारा लोक ईदर दे बिकम व्हाट आई वुड से सब्जुगेटेड बाय द ब्रिटिश और दे लॉस्ट देयर टेरिटरी बिकॉज ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स. तो ये पॉलिटिकल कॉजेस रे आसी आ कोन रहइबो ना इंडिपेंडेंस नथिला लोकल रूलर मानकर देयर वर नो इंडिपेंडेंस ऑफ द लोकल रूलर. लोकल रूलर कर किछि भी इंडिपेंडेंस नथिला. तो कोठी न कोठी पॉलिटिकल पावर से मानकर हम केबा हार्म होतला बाय पॉलिटिकल इंटरेस्ट को हार्म होतला जोथि पे से माने रिवोल्ट करिवे. फॉर एग्जांपल अवध वाज जस्ट 1857 रे होची आपनकर war 1857 war or that is the revolt, but in 1856 अवध was annexed. तो अवध को हमें कौन कले annexed कर दिया गला कहले मिसै देले with whom ईस्ट इंडिया कंपनी से तो मिसै दिया गला अवध को. on what basis? On the basis of malpractices or the maladministration. that means गोटे एक्सक्यूज दिया गला कि अवध जो रही ये ठीक से शासन करि पारुनी सेतबे हमें ताको ब्रिटिश टेरिटरी सह मिसै देलो. तो या द्वारा कौन है कि अवध रो जो लोक मैंने थे they would be obviously I mean Awadh that time was one of the most populated region. तो यार लोक मैंने obviously there would be now anger and they will obviously raise their voice against the system means British. ये थला अवध रो कॉज कि काहे कि अवध वाई अवध जेमते कि यूपी वाज द हॉटस्पॉट ऑफ 1857 रिवोल्ट. तार रीजन होची अवध कारण अवध को जस्ट 1 year before they annexed into their territory by putting some excuse that is the maladministration. आ सबुठ इंपोर्टेंट कथा होची कि 1700 जदि मन थो समस्तंकर 65 that was one of the landmark treaty in the history of East India Company, Treaty of Allahabad. The Treaty of Allahabad sign करथिला अवध. That means 1765 रू 1756 जाए 1756 जाए sorry 1800 sorry 1856 तो लगभग हम कहबा 100 years लगभग यदि हम देखिबा 90 years
पूरा 90 वर्ष है अवध was a reliable and friendly state with East India Company because they signed the treaty in 1765 in form of the Allahabad Treaty, which made the Awadh the friend of East India Company. Automatically, by signing that one, they became the friend. बट कौन सी लॉजिक नथिला कि 1856 रे अवध को माल न्यूट्रिशन गोटे सॉरी माल एडमिनिस्ट्रेशन गोटे एक्सक्यूज देखैकी ताकू मिसई देबा ईस्ट इंडिया कंपनी सहित बा ब्रिटिश टेरिटरी रे मिसई देबा दैट वाज कंप्लीटली एक्सक्यूज थिला ईस्ट इंडिया कंपनी रो तो ऑब्वियसली हम कहबा नाउ अवध लॉस्ट द पॉलिटिकल पावर सो लाइकवाइज जस्ट अ मिनट लाइकवाइज जदि आम देखा कि अवधर सिचुएशन आम देखिले लाइक संबलपुर कथा नहीं जाओ सतारा कथा नहीं जाओ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो मैंने अनेक्स्ट होते लेट इट बी योर लखनऊ लेट इट बी कानपुर लेट इट बी आम झांसी की भी मिसई देले तो ये सबू जो एरिया जो मन को अनेक्स्ट करा जाइथिला थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये समझते now they become exactly I would say they were dissatisfied with the system with the political scenario or the political atmosphere that prevailed in that particular time over the India altogether हम कहवा ये तो political गला सेंते आपका social issue कौन थिला कब social issues रे कौन मुंडो खेलुथिले ना एबे ईस्ट इंडिया कंपनी they were against the sati system. They were against the child marriage. They were against the somewhere आउ कौन करथले माने जो कन्वर्जन करूथले माने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करूथले कन्वर्जन करूथले ये तो जानछ 1813 यदि हम देखिबा 1813 एक्ट promotes the Christianism or that is the what propagation of Christianism that started through the what 1813 act यदि हम देखिबा तो ताद्रा कौन होतला कि इंडियन माने डिससैटिस्फाइड होतले कि 1813 रे Christians were allowed to preach their religion in India and they were not allowed to preach only they were also allowed to converge हिंदू मान को कन्वर्ज करा जाउतला ये प्रैक्टिस एबे भी चलची है ना तो कन्वर्जन होतला तनु एथरे भी जो माने रिलीजियन सेंटिमेंट ऑफ दिस वेरी पीपल that would definitely hurt the religious sentiment of the people so that was also one of the reason why the peoples were angered when and they finally revolted against the system or against the East India Company in 1857 ये थिला मतलब रिलीजन इशू को हमें देखिबा काना सती सिस्टम तो थिला हाँ मु कोन की सती सिस्टम it was they were wrong while putting the step against the sati system they were right दो राजा रामन रॉय भी सपोर्ट करते एंड जदि हम देखा लॉर्ड विलियम बेंटिक कथा तो समझते जानचे इट वाज 1829 that Bengal passed a law that sati system will be banned in Bengal and for that only one man तो जानचो one only तो कहबिनी जे कि सबुठो इंपोर्टेंट काम करथले राजा रामन रॉय है ना तांकर जो इच्छा थला बा तांकर जो he strived forwarded for that and exactly he was helped by the Lord William Bentinck. The Lord William Bentinck and Raja Raman Roy ये दी जन मिसिकी सती सिस्टम को उठे देले जे सती सिस्टम तो उठी गला बहुत बढ़िया कथा बट सती सिस्टम जो उठी गला जदि हम देखबा सती को एटा इ जहा फैक्ट कहूची ठीक ठीक मन रखो एबे बिना स्लाइड रे मु कहूची कने ठीक मु बैकग्राउंड प्रिपेयर करूची देन हम स्लाइड यूज करबी मु So 1813 रे कोन हला कि religion sentiments of this very people of this land that means 1813 रे मोकली कि conversion of Christians they started to converging the Hindus मान को conversion करेले ना 1829 रे मोकली सती system को ban करा गला in Bengal and which was adopted by the Bombay presidency they adopted in 1830 that means somehow सती को भी ban करिया पे step नहीं थे East India Company
which was not liked by the native people because that was a practice they were practicing quite since the civilization long time. So ସେମାନେ ready ନଥିଲେ to leave that cause, to leave the sati system which was prevalent in the society. They were not ready to accept that case somebody is coming from the outside and they are interfering into our cultural system, disturbing our rituals, our culture, though they were not wrong. matlab, they were wrong, I would say, not they were wrong because sati system तो obviously किए कहो कि sati system भलो थिला बोली है ना, that was wrong. So जदियो ସେମାନେ କିଛି good step नौଥିଲେ but obviously ଆମେ कहवा कि society was not that much of matured नथिला कि एई सब जिंस को जानि परिबो ଆଉ सोसाइटी କିଛି ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଲୋକ ବି ରହୁଥିଲେ ତେଣୁ କରିକି ସତୀ ସିଷ୍ଟମ ହେଉଯାଉ କିମ୍ବା ଲେଟ୍ସ ଭିଡିଓ ମ୍ୟାରେଜ କଥା ନେଇଯାଉ ଭିଡିଓ ମ୍ୟାରେଜ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଯୋଉ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ତ ଭିଡିଓ ରିମ୍ୟାରେଜ କୁ ସେ ହିଁ ପପୁଲାରାଇଜ କରେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଣ୍ଡ ଭିଡିଓ ମ୍ୟାରେଜ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 1856 ଇଏ ବି ଦେଖ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ 1856 ରେ 57 କହୁନି ଜଷ୍ଟ 1 year बिफोर widow marriage को legalize करा गला that means it was approved कि now widows are allowed to marry someone else. So that means हम कहबा widow marriage को allow करा गला 1856. सती system को ban करा गला 1829 and 1830 in the Bombay presidency. Now just 1 year before it was 1856 another important development took place in that particular time. That was the Awadh was annexed by whom? Lord Dalhousie. So like these were the incidents, हमें कहवा कि background incidents which propelled or which were responsible altogether for the 1857 revolt. तो 1857 revolt कौन सी गोटिए causes जो हैनी, number of social, political, economical factors ता बाद रे religion factor ए सबु मिसिला पर 1857 revolt हैची. So now we will comes to the 8. Now, by the half of 19th century, that means in the mid of, I will say, the 1850 and plus means 1856, 1857. So this would be the mid of the 19th century. East India Company brought major portion of India under the controls because हमें जानी चाहिए ना ये तो already ये scenario में पढ़ी सारी because by 1818 Maratha were finished in India. And they were the last strong regional power who could have challenged the East India Company, but they were also finally subjugated. They were also I would say finished through by the 1818. So practically mu jota कहतली हाँ कि हाँ it was like a prelim test थिला 1857 it was like a prelim test for the East India Company and they passed the hurdle to become the master of this very land and rule for the next 200 years almost. तो ये थिला but यदि हम देखो exactly they started their ruling from since long back, that is the 1802 बेलको ना they were enough strong to rule whole part of India and to annex anyone they wish. जब ये जो to sustain this conquest है ना तांको कौन करे थिला and to exploit the trades. तो जहाँ भी हो तांकर तो गोटे ही मेजर थॉट्स नहीं कि तांकर माइंड रे आस्तले जेते बेले भी से आस्तले इंडिया को एज ए कंपनी आस्तले नॉट एज ए स्टेट. एटा सब मन रखो कना छोटे छोटे सेंटेंस ना दैट मेक्स अ वेरी डिफरेंस टू योर आंसर एंड टू योर थॉट एज वेल. व्हेन इट्स ए कंपनी दैट मींस इट वाज नॉट ए स्टेट. When East India Company they came to India, not British came to India. So this is the difference. So now that means हमें देखिबा to fulfill the aims तांकर aim कोन थला कि इंडिया को आसीबा अधिक अधिक ट्रेड करिबा बेनिफिट नबा and again back to their own country. तो ता सेथि पई से माने बेट्रायल कले एंड एवराइज कले बहुत लोगों को धोखा दवा पड़ुची ता पई ब्राइब करे पड़ुची ये सब करतला. And before 1857 जते में रिवॉल्ट पर many natives domination were annexed by the East India Company forcefully. जेमति हमें सातारा कथा नहीं जिबा झांसी कथा नहीं जाओ संबलपुर कथा नहीं जाओ अवध कथा नहीं जाओ ये सब को फोर्सफुली कौन करथिला अनेक्स कर देथिला थ्रू द डिफरेंट पॉलिसीज लाइक द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है जो किंबा सब्सिडियरी अलायंस है जो
So British government आम देखा was sucking up blood of the both rulers and the people through the एथरे आम land revenue system भी कही परिबा. For example कि dual rule. अच्छा देखो one thing, if I put a question over here, मतलब ये सबू मो मते अच्छा बुझा पड़ुछि ना समस्त को ना बेसी मैं, otherwise I would not explain so much, I will move smoothly. करना ये होप मु बिलीव करबी कि तमने जदि सब स्लाइड माने सब लेसन गुडा देखि चल बैक लेसन गुडा जहा तो दैट विल ऑब्वियसली कंस्ट्रक्ट फॉर द 1857 पे हे जिवो भाबुची आ. तो इथरे कोन कला लैंड रेवेन्यू इशू हमें जे देखबा कि लैंड रेवेन्यू जो प्रॉब्लम थिला ना एथरे हमें जेमति कि जमीदार सिस्टम आसेला कि परमानेंट सेटलमेंट आसेला किंबा लेट्स से तो डुअल रूल इन बंगाल. बेंगल रे डुअल रूल करी कि कोन कला बेंगल रो प्रॉस्पेरिटी को खत्म कर देलो. तो दैट मींस बेंगल रो लोक माने भी तो डिससैटिस्फाई है ना. एंड दे दो बेंगल डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द 1857 रिवोल्ट बट बिहार डिड. And Bihar लोक माने भी dissatisfied थे with the dual government. Odisha people also, the people of Kalinga, they were also dissatisfied with the dual government which was established by them because that exploited the both ruler and peasant as well. तो याकू भी हमें गोटे 1857 रो कॉजेस नहीं परिबा किंबा से रथवारी सिस्टम हमको जहाँ अच्छे रेवेन्यू सिस्टम को नहीं political experiment, let's say the doctrine of lapse subsidiary alliance आपको भी हमें कह दिले कि they were also cause because that कोठी ना कोठी लोगों को डिससैटिस्फाई कराई थिले तेणु करिक आपको ले प्लस पीजान मन को कौन से ध्यान दउ नथिले तेणु करिक ये सब कॉजेस थिला हमें ये देखिबा ना. ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 टू 1857 भीतर हम जे देखिबा बैटल ऑफ प्लासी नहीं कि हमें देखिबा द बट जाको हम कहूजे Sepoy mutiny जहाँ को हम कहूचे 1857 also called as the Sepoy mutiny. तो ग्रेट रिवॉल्ट भी कहा जाए किसी हिस्टोरियंस कौन थे द फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जहाँ भी हो ये जो 100 इयर्स हमें देखिबा ये 100 ईयर कौन है ना लॉट्स ऑफ डिसकंटेंट इमर्ज्ड हेथला among the different section of the Indian people against the East India Company. कारण 1857 हम देखिए बैटल ऑफ प्लासी ठू नहीं कि जत्ते भी से माने वार लड़ी चंती तापरे लेट्स से हमें कहबा कर्नाटिक वार कथा नहीं जाओ, लेट्स से हमें कहबा मराठा वार कथा नहीं जाओ, अवध कथा नहीं जाओ, बैटल ऑफ बक्सार कथा नहीं जाओ. तो एथरे प्रत्येक ईच सेक्शन डिससैटिस्फाई होतले ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट सहित. हां दे वर नॉट गेटिंग ए चांस टू एक्सप्रेस देमसेल्फ और द सिचुएशन वाज नॉट गुड to express themselves, but 1857 रे से चांस आस्थला to express themselves because there was no other choice. आउ किसी choice ही नथिला तेणु ये आम गोटे कही परिबा. एंड ऑफ द मुगल रूल देखिबा gave a psychological blow to the Muslim as well. जेतले भाबो मुगल भी खत्म हे गला ना मुस्लिम दे थॉट यार मतलब आमर पोजीशन भी गला एंजॉय द पोजीशन ऑफ द पैट्रोनेज अंडर द मुगल. तो बहुत सारा जमीदार थिले जो मानकर लैंड ओनरशिप भी पड़े गला कारण आम जानसे कि जमीदार सिस्टम रे जदी जमीदार माने भी ठीक टाइम रे रेवेन्यू दौ नथिले सेमान के लैंड भी कौन होतला कैप्चर कर दउथले. तो ये आम देखि परिबा बहुत सारा पॉलिसी कमर्शियल पॉलिसीज रे आम देखिबा जेमति कि आर्टिसंस कथा नहीं जाओ, क्राफ्टमैन्स कथा नहीं जाओ. They were also dissatisfied. Why they were dissatisfied? They were dissatisfied because they lost their I would say what lost their profession. They lost the profit altogether. They lost the industry. I will say पूरा इंडस्ट्री ही खत्म हो गला कारण इंपोर्ट अधिक हैला. Import now it was import more than the outside export. एक मिनट स्पेशली आम देखा जमी मुझे परमानेंट सेटलमेंट ही जो तुम रथवारी सिस्टम लेट इट बी रथवारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट इज ऑल वे द कॉजेस. दिस वे द व्हाट इकोनॉमिक कॉजेस यू मे से इकोनॉमिक कॉजेस ना रिवोल्ट आम देखा तो हो बैकग्राउंड रे बुझी परिबो तले बैकग्राउंड अगेन मु कहि दोची जेमति कि तमरो 1813 that was one of the reason कि because of the Christian missionaries were allowed in India for the preaching of Christianism and also conversion भी करूथले.
Then it comes to what I would say 1829 सती सिस्टम को उठे दिया गला बेंगल रे एंड सेम सिस्टम को मद्रास प्रेसिडेंसी अप्लाइड कले 1830 रे. Then comes to year what 1800 अगेन हम देखिबा 1835 36 बेलको आउ गोटे जिंस होइतला इंग्लिश जदि आम तुम देखिए इंग्लिश वाज आल्सो इंट्रोड्यूस इनटू द एजुकेशन सिस्टम. तो कोठी ना कोठी ये भी गोटे कजेस हे पारिबो. ठीक अछि बुक रे न थौ कोन हे जोची हमर बुक सहित किछि भी रिलेशन नाही. बुक है ना ऑथर सब बेले कनेक्ट करके लिखि परिबो मतलब बूस्ट बेस्ट बुक बोली कहि परिबो सेमति भी किछि न थाए. दिस इज सेति पय तो सिविल सर्विस डिफरेंस जे तमे केमति ताकू परसीव करूचो ताकू केमति प्रूफ करै पारुचो कि हां ये दिस कुड बी वन कॉज. जेमति मु कहली लेट्स से 1836 बेलको English was adopted as the mean of education in India. जो थरे जदी से सेंटेंस बने थे वो कि we need the people, we need the what British in taste but blood Indian blood हितवा British taste थे वो सेतमे इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करा गला. अच्छा आथरा कोन किछि लोक तो डिससैटिस्फाई हबा मु कोन को ऑल द सेक्शन विल डिससैटिस्फाई ये भी गुड कॉज थला. देन इट कम्स टू द 18 जदी हम देखिबा 56 57 रिवोल्ट ऑफ 56 अवध was annexed. 1856 रे आउ गोटे भी इंसिडेंस हेतला कोन ना विडो रीमैरेज को अलाउ कर देले ब्रिटिश माने. कारण ये तुमको बेटे तो बहुत भलो थिला मु भी बना करूनी जे बट असुविधा होची जो माने ऑर्थोडॉक्स थिले ना से माने राजी न थिले. से माने कहथि ये तो आमो कल्चर ये के इंटरफेयर करूचंती. तो कोठी न कोठी ये प्रॉब्लम. That means child marriage को भी उठे देते. It was 1700 I'm forgetting 94 like that but I'm forgetting that date 92 की 94 हबो जो थरे की हमरो जो चाइल्ड इन्फांटिसाइड को भी बैन कर देते जाबियो. तो एमती देन आम तो रेवेन्यू सिस्टम को भी लिखिबो. ये तो सब मु कहितली क्रोनोलॉजिकली किछि इवेंट्स कथा कहितली जो माने की बैकग्राउंड कॉज रे जीवो. देन तमे रेवेन्यू सिस्टम लिखि परिबो जेमती जमीदारी रथवारी सिस्टम मालवारी सिस्टम एथरे भी लोक सैटिस्फाई नथिले. डुअल गवर्नमेंट लोक सैटिस्फाई नथिले. देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लोक सैटिस्फाई नथिले. पॉलिटिकल पावर हैम्पर होतला. तो ये सब मिसी गेले हिजो बैकग्राउंड कॉज बस ये थला पूरा सब कना मु एते डीपली जाई पढ़ाई हबनी कि पूरा क्रोनोलॉजिकली मॉडर्न हिस्ट्री पढौची सेटा ऑप्शनल पे पढ़ा जाए. सेति पे मु जो तमरो लेट्स से जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग वगैरह ये छाड़ी देले एति पे कि ताकू प्रिलिम रे कवर करे देवा डिस्कशन रे. किंतु एबे जदि मु पढ़ाई पे लागि जेबना पूरा छुटिया मोटे टॉपिक तो बहुत टाइम लागि जो मॉडर्न इंडिया. सेति पे मु ताकू किछि जिंस छोटो मोटो जिंस उडा को स्किप कर दोछि लाइक सती सिस्टम केबे एवोल्यूशन हला कोन हला. You may also raise the question on that, but that one when we will again जेमती ए वर्ष मु करथली के prelim discussion program that would be also but for the 2023 ପାଇଁ 2020 मतलब 2022 रो जो prelim टा 2023 रे हबो ता ପାଇଁ शायद डिसेंबर 15 रो मु स्टार्ट कर देबी prelim discussion program जोडा कि पूरा 5 मास खंडे चलियो 6 मास और सेथरे पूरा आराम से डिस्कशन करई देबी सब तक वीकली दी तीनटा रखिबी बेसी रखिबिनी. जेतले एग्जाम पाखे आसो सेतले हम अधिक रखिबा दैट फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाई देबा जाबियो. तो सेवरल कॉजेस थिला जेमति हम कहबा तो बहुत गुडा हम कहि देली सेथरे आसीबो. एंड फाइनली सिपाहीज मान करबे किछि प्रॉब्लम थिला. सिपाहीज मींस इंडियन सोल्जर्स. तो इंडियन सोल्जर्स दोस हु वर वर्किंग इन द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी रो आर्मी रे काम करूथले. ए माने लोकल they were local people engaged into the army. तांको ट्रेनिंग दे के आर्मी रे काम करूथले. सेथरे गोरखा भी थिला, इंडियंस थिले, पंजाबी थिले. पंजाबी माने आ परे आसीबो बट जाबियो गोरखा पंजाबी ध्यान से मन को गोरखा जो पंजाबी मान को जो इंडियन आर्मी रे इंट्रोड्यूस करगला आफ्टर 1857 रिवोल्ट परे. कारण से मानकर बिलीफ उठी गला हिंदू सोल्जर ऊपर मुस्लिम सोल्जर ऊपर बिलीफ उठी गला. सेथमे से माने गोरखा आ पंजाबी को ध्यान देले. सही दिन आज भी पंजाब माने जानचो पंजाबी माने डोमिनेट करछथि इंडियन आर्मी रे पूरा देखिबो ए तो समस्त जानिछो जाबियो. द सिपाही म्यूटिनी जाहा को हमें कहूचे और द 1857 रिवोल्ट रो में बहुत सारा कॉजेस में देखिली है ना. आकू सावरकर कहते कि फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किए कहते सावरकर. ध्यान से मन को सावरकर कहते आकू कि फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस. ये क्वेश्चन भी केबे केबे पचारा प्रिलिमिनरी फैक्चुअल क्वेश्चन ये है ना.
ना कजेस हम देखा पॉलिटिकल कजेस हम देखा व्हाट आर द पॉलिटिकल कजेस मु ऑलरेडी ये सब कहि देछि और किसी बाकी नहीं जेमति मु कहथले कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वन ऑफ द कजेस कोन पई एथरे झांसी को मिसा गला नागपुर को मिसा गला सतारा को मिसा गला संबलपुर को मिसा गला जैतपुर को मिसा गला नंबर ऑफ टेरिटरीज वेर अनेक्स्ड और जेतेबेले तुम अनेक्स्ड करूछो थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्हिच वाज डिवाइस्ड बाय whom it was introduced by whom it was Lord Dalhousie who came to India as the Governor General of Bengal in 1848. If you remember, yesterday itself I talked about that. है ना? So that person introduced this scheme for the what political paramounts in India to achieve the political paramounts in India. तो चाहूँगा कि only one power would be there. Why should we will have the different powers? Let the power to be one and only power East India Company वो बाकी कहीं रहे नहीं. Let it be Rani Lakshmi by cause. What was the cause with that person? She was not allowed to adopt. Okay, that means the son को से adopt करी परे नहीं बोली तमको allowed करालन. So that's why she lost the territory to the East India Company, and the East India Company annexed her territory, and she was not ready to give up that. She decided to fight back. So that was in the case of Rani Lakshmi. Otherwise, she would not join the revolt. Otherwise, revolt or Mukhabike, I would say that revolt could not be happened in the Jhansi region as well. So as she was dissatisfied, she had no choice whether she would go for the begging. No, because Rani ta kebe bhiko magi bhi nahi, Raja ta kebe bhiko magi bhi nahi. Let's say Nagpur Raja and his territory was annexed through the doctrine of lapse. Whether the king would be ready to beg? No, as they have been living a luxurious life, how would they be now displaced from the kingdom to the street? So they would be not ready to accept that. So that is why doctrine of lapse one of the major issue, one of the major background cause for the revolt 1857. So doctrine of lapse को थावे देखे थे तादर देखो जमती तुम कहली जैतपुर संबलपुर उदयपुर they were annexed, and all that people they got angered on the Lord Dalhousie. Even I told you that just I was talking about Awadh, how Awadh was annexed in 1856. It was on the basis of excuse that the ruler of the Awadh, that was Shah Shuja, who was governing the Awadh and misleading the people. It was their thought, it's not I am saying, it was their thought that the Awadh is being misgoverned and we want to give you the good governance. अब एते बढ़िया सोच थे तांकर कि अवध रो जो राजा सुजा was not ruling the Awadh in a right way, in an ethical way, and they मतलब से मैंने कहा था मु तम मान को भला शासन करो. It is better to remove that Awadh and directly it should be ruled by the East India Company. एते मतलब they were such a good wisher थे हमें कहवा people रो. So they were thinking like that. है ना ये जानी पड़तो कितने भला good wisher, how well good wishes they were at that point of time. Jabihu. So Awadh was one of the main reason. One of the main reason because almost 50,000 talukdars they were what I would say homeless through the jetebale Awadh ko mise dele. So almost 50,000 talukdars they had no choice only to fight back against the East India Company because they were not ready to beg. And one of the most populated region it was the Awadh. So obviously that will propelled or that their sentiment, their thoughts, their economic, their political, their social life, everything got harmed, and they were ready to fight. But because there was no other choice. Other choice ही किसी नहीं. जहाँ पर choice रहे बना से revolt करी वही नहीं. As they were having no choice now, only to fight back, nothing left. Thousands of nobles, officials, soldiers were jobless because of the Awadh was annexed. Our Awadh Lokmane, that is why they were ready to express themselves. That discontent, that they started to intrigger, मतलब planning करिबा. Social issues रे मु तुमको कहतली कि spreading this Western civilization. That means Western civilization जगह हमें कौन लिखिबा Christianism. They promoted the Christianism जोटा कि मैं already कहि देछि convert करूथले conversion करूथले already मैं कहि देछि आपण डेडलाइन मु दे देथली ये थला डेडलाइन ये ऑलरेडी हमें देख दीजिए मतलब ये कोठी ना कोठी हिंदू सेंटिमेंट्स वेर
harmed. It was not, I would say, not a Hindu. Muslims were also converted. It does not mean only the Hindus were converted into the Christianity. Muslims, other caste, Jainism, Buddhism, they were also converted by putting some of the money into their pocket. And sati system, I was also talking about how religion issue and sati system. Then we talked about the female infanticide. It was 1792 and the 94, if I rightly recall that one, and a child infanticide, which I told you just a few minutes ago. Then it was also one thing, if you that widow marriage, I was talking about the widow marriage, that was also one of the reason. So widow marriage, sati system, child infanticide, again, and particular the female infanticides, they were banned in India, and the peoples, the orthodox, they were not ready to accept that. तो ये भी कोटी ना कोटी से कहले कि आमर सोशल इश्यूज रे एमाने मुंडो खेलाउछंती, तो ये भी कोटी ना कोटी वेस्टर्न एजुकेशन, that was I also talked about that western education was imposed in India by 1836 बेले को हमें देखिबा है ना कुआ जाउथला कि जो particular sentence, I forgot who that particular sentence pronounced, that we need the what British in taste but Indian in plot. तो ये साइथिपाई they introduced the English education in India by the 1836-1838. Lord Macaulay, who it was Lord Macaulay, है ना. तो Lord Macaulay को था जो हमें देखिबा तांकर टाइम रे आस्तला इंग्लिश एजुकेशन को जतरा इंट्रोड्यूस करागला. सो ये कोठी ना दैट मीन्स प्रॉब्लम थिला. तो ये प्रॉब्लम थिला मतलब हमर लोकल लैंग्वेज को रेस्पेक्ट दिया गला नहीं, लोकल लैंग्वेज को प्रिफर्ड करागला नहीं, लोकल लैंग्वेज जो मैंने एजुकेटेड है दे हैव नॉट बी गिवन एनी जॉब, गवर्नमेंट जॉब. तो ये सब प्रॉब्लम थिला. जब देन असला कोन रेलवे टेलीग्राम कम्युनिकेशन डेवलप हैला. यार बैक क्लास थिला, दैट वाज द बैक क्लास, आई वुड से बैक क्लास. अर्थ कोन जेतबे दे इंट्रोड्यूस रेलवे, दे इंट्रोड्यूस टेलीग्राम, they introduced roads and port system in India. Though the roads were there also, like the शेर ससुरी कथा नहीं जो ग्रांड ट्रंक रोड कथा नहीं जो रोड सिस्टम थिला, बट एमने कोन रिवाइव कर देथिले ताको. ए सब करथिले कोन पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स इन इंडिया. एथरो तमर लेट्स से तमे बॉम्बे टू थाने जो रेलवे हितला प्रथम थर पे, ए सब कोन पे करा जायथिला कि मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करबा. किंतु से लोक जो धीरे धीरे रेलवे टेलीग्राफ है कम्युनिकेशन बढ़ला, लोक जानी पारे आउ गोटे एरिया लोक जो मूवमेंट बढ़ला लोकंर ना. लेट्स से पुरी और भुवनेश्वर दीटा बहुत बड़ डिस्टेंस थिला. से भुवनेश्वर लोक अलग, पुरी लोक अलग. तो पुरी लोकटा जो भुवनेश्वर पहुँचले कटक रे पहुँचले, कटक लोकटा पुरी रे पहुँचले, थ्रू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन दे स्टार्टेड टू एक्सचेंज देयर थॉट एंड द आइडियाज एंड इमोशन. तो से जानले कि हाँ कटक इज बीइंग रूल्ड बाय and Puri also being ruled by the same ruler. That means our common enemy is East India Company. So ये जो railway, telegraph and all that communication which developed in that particular time or through the course of the East India Company ruling system, that I would say enhance the sentiments of the people. Communication लोगों बढ़िगला, thoughts exchange बढ़िगला, the emotion exchange बढ़िगला, and they identify the common enemy. So that was the basic point. I would say I will try to stress that particular word, that is the common enemy. So ये जो common enemy कथा मु कहूची सेते जणा पड़िला ये सब कम्युनिकेशन जोगो. देन इकोनॉमिक कॉजेस रे ऑलरेडी कहि दिछि जेते तमरो रेवेन्यू सिस्टम थिला. इवन डुअल गवर्नमेंट कथा मु कहितली जोटे तमरो बेंगल रो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म कर देला. तो ताकू सब तुम एठी यूज करि परिबो सब जगह. कि बेंगल रे एते बढ़िया इंडस्ट्री थिला से खत्म हे गेला. देखो जंते टेक्सटाइल इंडिया खत्म हे गेला. पर्टिकुलरली आम बेंगल कथा कहवा कि तुम देख सेपर बिलोंग टू द पिजांट एवं लोक मैंने केमती करेंगे. देख सल्ट उपर टैक्स लगेदेल, गारमेंट उपर टैक्स लगेदेल, हैंडीक्राफ्ट उपर टैक्स लगेदेल, हैंडीक्राफ्ट कहीं बनई पार ना. लोन बिकम सो कॉस्टली, लोन्स मनी लेंडर मैंने जो देते से कॉस्टली हो जाऊला. तो इवेंचुअली पीपल दे वर लूजिंग देयर इंडस्ट्री. इंपोर्ट बढ़ीगला, कौन है ना इंग्लैंड टू सामान आसला, सस्ता सामान इंडिया रे बिकाला. तो ऑब्वियसली चाइना रो मोबाइल 10,000 मिलूची बोली तो इंडियन कंपनी माने सस्टेन करि पारुनी. इंडियन कंपनी लाइक लाभा कथा नहीं जाओ, माइक्रोमैक्स कथा नहीं जाओ, व्हाई दे आर नॉट सस्टेनिंग इन द इंडियन मार्केट. कारण एमाने 10,000 टंका सेतिक सस्ता रे चाइना मोबाइल भला फीचर देई परिबो नाही. फॉर एग्जांपल सेम आल्सो दैट वाज आल्सो हैपेंड इन दैट टाइम. सेतेबेले बिकॉज ऑफ द चीप इंपोर्ट कथा आमे नहीं जाओ, बिकॉज ऑफ चीप इंपोर्ट जगु
ଆମର जो local industries thila, they got damaged or they finished off because they were not able to or they were not competitive enough with the foreign importers ସହିତ ନଥିଲା। तो ये कोठी ना कोठी heavy tax collection, stringent method of the revenue collection जोटा जमीदार सिस्टम वगैरह ये थिला, ये बहुत ही टफ मेथड थिला। तो इकोनॉमिक क्राइसिस रे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गला, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो गला, इकोनॉमी नाउ विल बी टर्न इनटू इंपोर्ट बेस्ड। आगे एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी थिला ना, इकोनॉमी चेंज्ड इनटू एक्सपोर्ट रू इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी हो गला। तो ये थिला इकोनॉमिक कॉजेस। मिलिटरी कॉजेस रे हम देखिबा, मु कहतली ई थरे हम देखिबा। तो इकोनॉमिक कॉजेस रे बाकी तमे इकोनॉमिक कॉजेस रे ना ए स्लाइड रे कोन लिखा नहीं देखो। लेट्स से स्लाइड रे लिखा नहीं डुअल रूलिंग और तार इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक बिहार बेंगल ओडिशा सेटा तमे लिखि पारि पारिबो। Then you can also write the permanent settlement. You can also go for the Rothwari system, Malwari system, all that revenue system which were very oppressive to the peasant. The peasant were at the end of the day, they were the losers. So you can also put that points in this particular slide valuation kariପାରିବ। Then military causes को हमें आसीबा। Military causes, militaries man को causes, like the Indian soldiers, they were called as the sepoy. So that is why this is the sepoy mutiny. So every section, that means I would say the ritual, or those who are practicing the rituals, even the household, women's, every section, even society ଆଉ ଗୋଟେ ବି problem तो ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଦେଖିପାରିବ कि corruption was very prevalent in the Indian society and that was also started by these people। ए corruption इंडिया रे केमती ହେଲା, ए मान को जो स्टार्ट ହେଲା ना। तो इंडियन सिपाही 87% थिला, but they were considered inferior to the British soldier। अच्छा ठीक है, यार मु स्लाइड को मु जाउनी फटाफट एठी कहि दउची, मु लेखि कहि दउची कि इंडियन सिपाही मानकर प्रॉब्लम कोन थिला। प्रथम कथा हला इंडियन सिपाही मानकर टोटल जो नंबर थिला ना, लेट्स से देयर वर 1000 पीपल मिलिटरी, ता धरो भाबो 87%, दैट मीन्स आमे कहबा लेट्स से 850 है ना, 850 होची इंडियन सोल्जर जाको हमें सिपाही कहूची। एबे जदि मेजॉरिटी ऑफ द सोल्जर्स वर फ्रॉम द इंडियन और द इंडिया, दे वर ट्रेन्ड एंड दे नाउ इंडक्टेड इनटू द ब्रिटिश सोल्जर सिस्टम बे आनीथिले जहाँ भी हो, बट सेमान को कोन कथा इनफीरियर ट्रीटमेंट होतला। प्रथम कथा 87% टोटल ब्रिटिश सोल्जर करथिले, बट तांको बड़ा पोस्ट दिया जीव नहीं। दे वर इनफीरियर इन टर्म्स ऑफ द पोस्ट, सेमान को बड़ा पोस्ट दिया जीव नहीं, बड़ा पोस्ट ए माने इंडियन माने रही परिबे नहीं, तेनु करके माने डिससैटिस्फाई होथिले। ऑलवेज द ईस्ट इंडिया कंपनीज र मेंबर्स and their people will hold or would hold that time I would say the post that is the higher post, but particularly say the higher post। then आउ कोन देखाइतला सैलरी डिस्क्रिमिनेशन, ये भी देखा जाउतला। आउ कोन देखाइतला फूड डिस्क्रिमिनेशन, that means Indian were served with low quality foods whereas the British were having the high quality foods and they were having more privileges as well। They're having more privileges, more allowances, good quality of foods, good quality of houses. They were having weapons like I would say the jemti guns समस्त रखी परिबनी, they would be allowed to do है ना, जते भलो weapon आसबो से मन रखिबे and ये सब प्रॉब्लम थिला। आउ कोन प्रॉब्लम थिला ने, इंडियन सोल्जर माने सेतल भाबो बेंगल रे गोटे रेजिमेंट थिला, फॉर एग्जांपल बेंगल रेजिमेंट, they would be asked to serve in Odisha as well। ओडिशा रे ताको सर्व करिया पे कुहा जिवो। सो बट दे वुड नॉट बी गिवन द एक्स्ट्रा अलाउंसेस फॉर दैट, एक्स्ट्रा काम पे एक्स्ट्रा अलाउंसेस देवा कथा बट देबे नाही। एंड ता द्वारा कोन होतला ना, जो इंडियन सेपोई थिले से माने भाबुथिले कि दैट टाइम दैट देयर वाज बिलीव दैट इफ यू आर क्रॉसिंग द रिवर लाइक गंगा यू आर लूजिंग द रिलीजन। तो कोठी ना कोठी रिलीजन सेंटिमेंट ऑफ द इंडियन सोल्जर्स और द सिपाहीज वर हॉट थ्रू दिस। आउ कोन हला ना 18 लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस कले, समस्त जानिछ इमीडिएट कॉज को आसी पाबे कोन करथले ना मोर एनफील्ड राइफल, तापर आसीबो कोन 1856 रे एनफील्ड राइफल आसी जिवो। एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस हला इंडिया रे नुआ गन। आ जहार कैटरीज थिला से कैटरीज को कोन होतला दांत रे छिंडे की सेथरे जो बुलेट टाको ना, बुलेट टाको केमती लोड करिया पडुथिला by biting I would say by bite काउंट करियो, बाइट करियो काहाकू कैटरीज को बाइट करिकी
से बुलेट टाकू ता भितर बाहर करके तापर गन रे लोड करूथले दैट कैटरिज वाज मेड ऑफ द फैट ऑफ व्हाट बीफ ओके जाओ जोटा कि हम गोरु गाई रो आउ गीज रो एंड पिग रो मतलब गीज एंड बीफ है ना बीफ आउ गीज रो फैट रे तयारी हेतिला जो आम कहबा कैटरिजटा तेणु करके ये रिलीजन सेंटिमेंट को हॉट करूथला तो ये भी हमें इमीडिएट कॉज ये होची हमरो इमीडिएट कॉज तो इमीडिएट कॉज ए रहइबो तो इमीडिएट कॉज यदि हम देखो जोटा मु तुमको कहथली द कैटरिज ये जो कैटरिजटा को सेटा कोन थिला ना कैटरिजटा को मु कहथली कि दांतरे छिंडे की ताको लोड करिया पड़तला जोथरे बीफ आउ गीज रो बा पीक रो फैट रे तयारी होथला दो कैटरिजटा तने आपको माने दांतरे छिंडे की लोड करिया पड़तला तो ये कैटरिज दैट मींस हमें राइफल रो लोड करिवो तो लोडिंग बिफोर इट लिखा है ना बिफोर तो लोडिंग ता द्वारा रिलीजन सेंटिमेंट हॉट करूची जदि तुम जानचो काओ को हमें गोमाता कहूचे और तांको सेटा तो तण इंडियन सोल्जर मन रेडी हेबेनी और जो माने मुस्लिम सेक्शन से माने पीक को मानंती तो तांकर और से माने भी रेडी हेबेनी तो बोथ हमें कहबा हिंदू एंड मुस्लिम दे वर डिससैटिस्फाइड दैट हॉट देयर रिलीजन सेंटिमेंट तण करी से माने कोन कर रिवोल्ट करिवे है ना तो ये तुमको जोटा कहि देली तो ए माने रिफ्यूज कले कहले ना नहीं हमें एमती लोड करि परिबो नाही तो लॉर्ड कैनिंग ट्राई टू अमेंड द एरर बट एटा कोठी ना कोठी ऑफेंड हैला एटा कोठी ना कोठी तमे ऑफेंड करी छ रिलीजन सेंटिमेंट को है ना और एथिरे जने लोक रागी जाइथिले से होचंदे मंगल पांडे ए सिपाही फ्रॉम द बाराकपुर यूपी है ना जे एते रागी जाइथिला ए जिंसो को नहीं की जे कैटरिज इशू को नहीं की he killed his senior officer through the gun and he was hanged ताको तापरे मार देले ताको hanged करा गला 8 अप्रैल this was the point of the beginning of the 1857 revolt ये थला outbreak of the so 8 April outbreak of 1857 revolt and who started Mangal Pandey from where Barakpur UP why he started because of his anguished because of his dissatisfaction over the categories which was made and which hurt the very sentiments of the both the religion Hindu and Muslim that is why he took the extreme step now this one is very important because 8 April Barakpur Mangal Pandey categories sentiments these are the things jetro tame note banaucho na just have a flow chart like this and it's not needed to write like these the categories was made of homoko simple write categories it was then slash or you may say like putting an arrow and give it was cow fat and let's say the pig fats but then but hot that hotted the sentiments pone again arrow mark बस एमती करके शॉर्ट नोट बनेबो सेटा बुझा पड़ जो यू आर नॉट ओके छोटो पिला नहीं के 10th 12th पढुचो कि नॉट गेटिंग द पॉइंट्स दैट वुड बी इजी नाउ एंड नेक्स्ट टाइम देखिबा तो कोन हला बाराकपुर स्टार्ट हिजबो एथिरे जेतबे तांको मार दिया गला मंगल पांडे को हैंग करे दिया गला और तांकर जो रेजिमेंट थिला से रेजिमेंट को बैन करा गला और 9th में है ना ध्यान से मन को एठी लिखा है स्लाइड रे कि जो रेजिमेंट रू से बिलोंग करूथले ना से रेजिमेंट को कंप्लीटली दैट वाज बैंड से रेजिमेंट थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स थे हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स थे दे ऑल वर बैंड फ्रॉम द सर्विंग so they were also dissatisfied they rose into the revolt as well they raised their voice against the system and ethire baki soldier Meerut jo thile Meerut was the hot spot now UP re Meerut achi jancho one of the largest city of UP and also close to Delhi Meerut re jodi ame dekhwa so I had opportunity to visit Meerut as well na eto mo friend rohunti close friends so Delhi de thila bole Javio Meerut ame देखिबा that time it was the hot spot that was the headquarter of British soldier ध्यान से मन कहबो पूरा जो सिपाही मन को हेडक्वार्टर थिला तमको एठी कहीं हेडक्वार्टर थिला कारण यदि हमें देखिबा 1857 जस्ट पूर्व हेडक्वार्टर टा शिफ्ट करा जाय ना एठी बहुत सारा सोल्जर होथले से माने दे ऑल टुगेदर ना दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द सिस्टम then central revolt को आसीबा ये तो हमें स्टार्टिंग ऑफ द रिवोल्ट देखले बैकग्राउंड देखि देले इमीडिएट कॉज देखि देले पूरा रिवोल्ट रो एबे हम देखा स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट केबे स्प्रेड कला तो देखिए हम मैप अछि कि नहीं मैप हेले बहुत भलो हबो नो देयर इज नो मैप
इमीडिएट कॉज हमें देखी देले, बैकग्राउंड कॉज हमें देखी सारी छे। ओके, देन हु पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट, रिवोल्ट रे को माने भाग नैथिले एटा सुनी दियो, आगे सुनी दियो तापर मन रखो। मु मैप का लेट्स से मु इंडिया मैप टिके ड्रॉ कर दिए सो दैट इजी हो तुमको मन रखियो भाई। ना दिस पुट द मैप है ना, जो एरिया ऑफ रिवोल्ट कौन था, जस्ट अ मिनट। ऑडिबल होचे ना समस्त को, आवाज बहुत क्लियर आसुचे आई बिलीव। सर क्लियर अच्छी है ना, थैंक यू। तो ये देखो ये होची एमती मैप ड्रॉ कर दो माइंड रे, मैप टा जल्दी हमें देखले मन रे। तो ये थला यूपी प्लेन बा अवध, हमें कहबा ये गैंगेटिक प्लेन, पूरा जो रिवोल्ट है ना इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द गैंगेटिक प्लेन। तेणु करिकी जेतबे हम एमती गोटे मैप ड्रॉ कर देकी तुरंत ताको करिबाबे, ताले ये जो थिला ना बेंगल वाट्स नॉट दैट मींस देखो एपटे रहइबो हमर पंजाब, तान से मरको वार रो एक्सटेंशन मु कहूची माने को रीजन रही थिला। एपटे रहइबो विंध्या, विंध्या माउंटेन रेंज अछि, विंध्या बा नर्मदा और यू में से नर्मदा, साउथ रे नर्मदा, नॉर्थ रे पंजाब, कहले पंजाब और नर्मदा भितरे एपटे रहइबो राजपूत, कहले राजस्थान, राजस्थान एपटे रहइबो तुमरो बेंगल, ध्यान से था बेंगल, ईस्ट रे बेंगल, वेस्ट राजपूत, नॉर्थ रे पंजाब, साउथ रहइबो नर्मदा और विंध्या रेंज। ये थिला बट आर मझी एरिया टा जोटा रहिला एई एरिया रे वार होउथला, दैट मींस 1857 जदि हम देखबा इन द ईस्ट इट वाज बेंगल, डब्ल्यूबी एबेरो डब्ल्यूबी म कहूची, इट वाज राजस्थान, it was Punjab. कहले Punjab didn't participated in the revolt. Rajput or the Rajasthan didn't participated. Maratha didn't participate. Karna Maratha comes beyond or south to the Narmada বা বিন্ধ্যা রেঞ্জ। বিহার পার্টিসিপেট করଥିଲା, বেঙ্গল পার্টিসিপেট করি নথিলা। তাহলে পার্টিসিপেশন কলা কিଏ? অবধ, यूपी, बिहार ये माने पार्टिसिपेशन। हॉटस्पॉट किए थिला दिल्ली, हॉटस्पॉट कौन थिला? आगरा, लखनऊ, कानपुर, बुझ पारछनी, वाराणसी, ये थिला द हॉटस्पॉट। दैट मींस हमें कहबा गैंगेटिक प्लेन इन ज्योग्राफिकली आई विल से गैंगेटिक प्लेन वाज द सेंट्रल एंड अपर गैंगेटिक प्लेन। ध्यान से सुनिबो, द सेंट्रल एंड अपर गैंगेटिक प्लेन वाज द हॉटस्पॉट ऑफ दिस रिवोल्ट। ये थिला स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट, एतिकी एरिया रे रिवोल्ट होथला। दैट मींस तुमको पचारिबो कि वेदर पंजाब वाज पार्टिसिपेटेड, पंजाब वाज द प्लेयर, नो they were not. Had they participated in that particular revolt, the course of the war and the result could have been different, but as they didn't participate, that is why ସେଥିପାଇଁ କିଛି ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ବି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁହନ୍ତି କି they act as a breakwater, they act as a breakwater। ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ୱେଭ୍ସ ଆସେ ନା, ୱେଭ୍ସ କୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେବା ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କମିଯିବ। ये जो रिवोल्ट ଥିଲା ନା, it was like a waves in India, it was like a, who's that person now asking? सुश्री ये कौन क्लास एंड रे आसुछ तमे? सॉरी सर जानि पेलानी आज क्लास मु तो मना कर नथली हबनी बोली, मु कहितली कि मु जो दिन हबनी मु कहि देबी ना। हाँ तो मु कहतली एटा बस एति कहि छाड़ देबी, आउ तुमको टाइम करबेनी kana टाइम हे गेलानी। हॉटस्पॉट ऑफ द रिवोल्ट थिला कोन ना, अपर गैंगेटिक प्लेन, मिडिल गैंगेटिक प्लेन, नॉट लोअर गैंगेटिक प्लेन। म्यूट करके रखो समझते स्पीकर को। तो ये थिला ना स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट। तो हमें तापर हमें जेवा काली किए किए पार्टिसिपेट करथिले, बस गोटे सेंटेंस मु कहि दउची मन रहि जबो कि नाना साहेब, जदि तुम कहबो नाना फ्रॉम द कानपुर, नाना फ्रॉम द कानपुर है ना, तो तुम कहबो इंडियन रो जदि हमें कानपुर थिले नाना साहेब, रानी बेगम हजरत महल फ्रॉम लखनऊ, रानी झांसी फ्रॉम झांसी, तांटिया टोपे फ्रॉम ग्वालियर, then it would be Bahadur Shah from Delhi, or I would say Mughal ruler thila,
एक्जाक्टली दिल्ली रू कमांडर चीफ रहिबो बहादुर सांकर कमांडर चीफ रहिबे है ना देन आमे बारेली रू देखिबा देन वी विल गो थ्रू द व्हाट बिहार रू देखिबा तो ये थिला आमे जति देखिबा तो को एरिया देखिबा आमे देखो एठी लिखा अछि मु तुमको कहतली कि कानपुर रू रहिबो बिहार रू रहिबो ग्वालियर रू तांटेटपे झांसी बारेली लखनऊ दिल्ली तो एबे में गोटे गोटे लोक देखिबा किए सब भाग नैथिले देखो झांसी रू कह देली मु रानी झांसी पई ग्वालियर रू तांटेटपे बिहार रू कन्वर सिंह सब ओल्डेस्ट लोक थिले से है ना आउ के थिले जेंति बरेली रू खान बहादुर छ दिल्ली कुआडे गेला हां ये ने ये नो बहादुर सा तो थिले बट कुआडे गेला आउ जने लोक आई एम मिसिंग समवन एल्स ये ठो कमांडर थिले कौन से नाटा भूली होचो ये तो बरे खान बहादुर कौन थिला कना संगता अंडा मन अछि ना कहि परबे मोर तो मन पडुनी एबे कोन नाटा थिला मु बेउ देखिनी ताको ठीक अछि काली कहि देबी है ना बाकी मु काली कहि देबी तो ये थिला आज रो लेसन एंड होप बुझा तो पडु